आज हम लोग टाइप 2 के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे। इस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई एक ही फैक्टर सभी टर्म्स में कॉमन नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक एन एक्सप्रेशन ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। बाय ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं इसमें कोई एक ही फैक्टर सभी टर्म्स में कॉमन नहीं है। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ग्रुप वाइज सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जाम्पल, ax प्लस ay में अगर हम ax प्लस ay को एक ग्रुप बना लें और bx प्लस by को एक ग्रुप बना लें, तब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में a एज ए कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, एंड सो वी कैन राइट इट एज a टाइम्स अंडर ब्रैकेट x plus y. Similarly, we can say in the second group b is available as common factor, so we can take out b as common factor and then the other factor will be under bracket x plus y. इस तरह दोनों ग्रुप को अगर हम कंबाइंडली कंसीडर करें तो दोनों ग्रुप से हम x plus y को एज कॉमन फैक्टर टेक आउट कर सकते हैं, और x plus y को एज ए कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप a, सो अंडर ब्रैकेट a को यहां पर हम एक्सप्रेस करेंगे, और फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप x प्लस y को एज कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद जो अदर टर्म्स मिलेगा वो होगा b, और इसलिए b को विद द साइन ऑफ प्लस जो यहां अवेलेबल है उसके साथ यहां पर एक्सप्रेस करेंगे, सो प्लस b। thus we can say the given expression can be factorized in this way. इसी आइडिया के हेल्प से हम यहां पर कुछ और एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, फैक्टराइज a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab प्लस ac। इस एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए यहां भी हमें दो का ग्रुप बना करके कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना होगा। अगर हम a स्क्वायर प्लस bc को एक ग्रुप बनाएं तो इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अगर हम a स्क्वायर और ab को ग्रुप बनाएं तो इनमें a एज कॉमन फैक्टर अवेलेबल है। इसी तरह bc और ac जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इसमें कॉमन फैक्टर c अवेलेबल होगा, इसीलिए यहां पर फर्स्ट ग्रुप है a स्क्वायर प्लस ab और सेकेंड ग्रुप है bc प्लस ac। नाउ इन द फर्स्ट ग्रुप a कैन बी टेकन आउट एज कॉमन फैक्टर, एंड सो द रिमेनिंग टर्म्स विल बी अंडर ब्रैकेट a फ्रॉम a स्क्वायर एंड b फ्रॉम ab। therefore a plus b will be the other factor. Now we come to the second group. सेकेंड ग्रुप में भी we can say c can be taken out as common factor. c को टेक आउट करने के बाद एज कॉमन फैक्टर we find b plus a as the other factor. By commutative law we can say a plus b and b plus a are the same. Therefore a plus b या b plus a को एज ए कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद we find the other factor as a plus c. So a plus b into a plus c is the required factorization of the given expression. Now we come to example 2. फैक्टराइज, यहां भी हमें फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन है ax प्लस by टू द होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay टू द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर टर्म का एक्सप्रेशन है, इसलिए सबसे पहले यहां पर हर स्क्वायर टर्म को हम एक्सपांड करेंगे। बाय एक्सपांडिंग ax प्लस by टू द होल स्क्वायर कम्स a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह bx माइनस ay टू द होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करते हैं तो हम पाते हैं b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। आफ्टर द एक्सपांशन वी कैन से 2abxy माइनस और 2abxy प्लस कैन बी कैंसिल्ड। नाउ वी गेट द रिमेनिंग टर्म्स एज a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर एंड देन प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। Now, by observation we can say कोई भी फैक्टर in all the four terms as common factor available नहीं है, therefore we make a group of two terms. इस तरह से ग्रुप बनाएंगे कि हर ग्रुप से एक फैक्टर कॉमनली टेक आउट किया जा सके। इसके लिए आफ्टर रीअरेंजिंग we can say अगर a स्क्वायर x स्क्वायर को b स्क्वायर x स्क्वायर के साथ ग्रुप बनाया जाए then we can take out x स्क्वायर as common factor. इसी तरह से अगर b स्क्वायर y स्क्वायर को a स्क्वायर y स्क्वायर के साथ ग्रुप बनाया जाए then we can take out y स्क्वायर as common factor and we do the same.
इसलिए पहले ग्रुप से एक्स स्क्वायर को एज कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद वी फाइंड द अदर फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ग्रुप में वाई स्क्वायर को एज कॉमन फैक्टर टेक आउट करने के बाद वी फाइंड द अदर फैक्टर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. By the same logic, we can say b square plus a square and a square plus b square are the same. Therefore, by taking out a square plus b square as common factor from each group, we find the remaining terms x square from the first group and y square from the second group. So, x square plus y square will be the other factor, and therefore a square plus b square into x square plus y square will be the required factorization of the given expression. अब तक हम लोगों ने जो आइडिया डेवलप किया about the factorization of the second type of expression, by using that idea we will factorize more expressions under the exercise 4b. Our first question to factorize is bx plus 2b plus cx plus 2c. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए वी विल मेक द ग्रुप ऑफ टू टर्म्स. क्लियरली अगर bx और 2b का एक ग्रुप बनाया जाए, इसी तरह से cx और 2c का एक ग्रुप बनाया जाए, तो हम b को एज कॉमन फैक्टर यहां पर टेक आउट कर सकते हैं और c को एज कॉमन फैक्टर यहां पर टेक आउट कर सकते हैं. सो नाउ वी प्रोसीड हैविंग दिस आइडिया bx plus 2b plus cx plus 2c. Now we make the first group by taking these two terms and second group by taking these two terms. In the next step, we take b as common factor and then we find b times x plus 2. In the second group, we take c as common factor, and so by taking c as common factor, we find the other factor as x plus 2. Now this x plus 2 and this x plus 2 are available in the two groups. So they can be taken out as common factor. x plus 2 को common factor take out करने के बाद we find the other factor b plus c. Thus x plus 2 into b plus c is the required factorization of the given expression. Answer. Our second question is y cube plus 2y square plus 3y plus 6. यहाँ भी कोई भी फैक्टर in all the four terms available नहीं है. Therefore we make a group of two terms. अगर हम पहला दो टर्म्स का एक ग्रुप बनावें तो दूसरे दो टर्म का एक ग्रुप बनाना होगा. इसी परसेप्शन के अंडर वी प्रोसीड टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6. 3y प्लस 6 को एक ग्रुप बनाएंगे और y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर को एक ग्रुप बनाएंगे. नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी विल टेक y square as common factor from the first group and 3 as common factor from the second group. Therefore, y square into y plus 2 as the second factor in the first group plus 3 को take out करने के बाद as common factor we find the other factor from the second group y plus 2. Now this y plus 2 and this y plus 2 are available in the two groups. So y plus 2 can be taken out as common factor. Therefore, in the next step, we take out y plus 2 as common factor. That is y plus 2. And then y plus 2 को take out करने के बाद as common factor take out करने के बाद we find the other factor of y square from the first group and plus 3 from the second group. So y square plus 3 is the other factor, and therefore y plus 2 into y square plus 3 is the factorization of the required expression. Answer. Our next question is question number 3. X cube minus x square plus x minus a minus 1. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर इन ऑल द 6 टर्म्स अवेलेबल नहीं है. Therefore, we make the groups of two terms like this. Therefore, by making such groups of terms, we proceed to factorize the expression. X cube minus x square से we make one group, ax plus x से we make second group, and a minus 1 से we make the third group. But यहाँ पर जब a minus 1 को लेकर हम एक ग्रुप बनाएंगे तो we will put them under bracket like this.
अगर इस तरह से हम एक ग्रुप बनाते हैं तो इस ग्रुप से पहले यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है, तो ड्यू टू दिस साइन ऑफ माइनस, अंडर ब्रैकेट जो साइन ऑफ माइनस है इट विल चेंज इनटू प्लस, एंड देन नाउ वी प्रोसीड टू फाइंड कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप. By observation, in the first group, we can take out x square as common factor, and then after taking out x square as common factor, we find x minus 1 as the other factor in the first group. In the second group, x can be taken out as common factor, so we take out x as common factor, and then we find a plus 1 as the other factor. The third group will be as it is, a plus 1 in the second group and a plus 1 in the third group are available as common factor in the two groups. Therefore, we take out a plus 1 as common factor in the two groups. In the next step, x square into x minus 1 will be as it is plus. अब इसके बाद a plus 1 जो सेकेंड और थर्ड ग्रुप में एज कॉमन फैक्टर अवेलेबल है उसे हम टेक आउट करते हैं, a plus 1, and therefore we will find the other factor as x minus 1. By observation, we can say x minus 1 in the first group and this x minus 1 in the second group are available as common factor. So, x minus 1 can be taken out as common factor, and we are doing the same in the next step. Therefore, by taking out x minus 1 as common factor, we find x square from the first group plus a plus 1 from the second group. Thus, x minus 1 into x square plus a plus 1 is the required factorization. Answer. Now we take question number 4. ab into c square plus 1 under bracket है plus c into under bracket a square plus b square. We have to factorize it also. Clearly, यहाँ पर in the two groups we find no common factor. So we proceed from here as ab times c square plus 1 plus c times a square plus b square equal to, in the next step we remove the bracket from each group, and then we find abc square plus ab from the first group and ca square plus cb square from the second group. abc square और ca square यहाँ फर्स्ट और थर्ड टर्म्स को लेकर के ग्रुप बना लें और सेकेंड और फोर्थ टर्म्स को लेकर एक ग्रुप बना लें. देन वी फाइंड abc स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर एज फर्स्ट ग्रुप प्लस ab प्लस cb स्क्वायर एज द सेकेंड ग्रुप. बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से ca फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, सो ca कैन बी टेकन आउट एज कॉमन फैक्टर. After taking out ca as common factor, we find the rest term is bc plus a, and in the second group by observation we can say b is commonly available in the two terms, so b can be taken out as common factor. Therefore, by taking out b as common factor, we find b times a plus bc. Now bc plus a in the first group and a plus bc in the second group both are the same by commutative law of addition. So a plus bc can be taken out as common factor, a plus bc into, thus ca plus b is the other factor. Therefore, a plus bc into ca plus b is the required factorization of the given expression. Answer. Now we come to the question number 5, and this is the last question for the day. p square plus 1 into q minus p square minus q square. Once again we can say यहाँ पर कोई भी फैक्टर in all the three terms commonly available नहीं है. Therefore, we proceed to factorize it as, first of all we remove the bracket from the first term. By removing the bracket we find p square q plus q. After this, minus p square and minus q square are the same. Now we make the group of two terms so that common factor can be taken out from each group. And so in the next step, we make the group of first term and third term. The first group is p square q minus p square. Similarly, the second group will be of the second term and the fourth term.
that is plus q minus q square. By observation, we can take out p square as common factor in the first group. Therefore, in the next step, we take out p square as common factor and then we find q minus 1 as the other factor. After this, plus this q minus q square, q can be taken as common factor and then we find 1 minus q as the other factor. Now, by observation, we can say q minus 1 in the first group and 1 minus q in the second group. जो अवेलेबल है दोनों में सेम टर्म्स हैं but they are not in the same order. So in such a situation we can change the order of terms in either group. For simplicity we change the order of the second group. और इसके लिए हमें just before the second group जो sign of plus है उसे sign of minus में change करना होगा. In the next step we do the same. p square into q minus 1 and minus q into q minus 1 and therefore we can say q minus 1 in the second group and q minus 1 in the first group can be taken out as common factor. Therefore, in the next step we take out q minus 1 as common factor. After taking out q minus 1 as common factor, we find the other factor of p square from the first group and q from the second group. Thus, p square minus q is the other factor. Therefore, q minus 1 into p square minus q is the required factorization of the given expression. Answer. This was all about the factorization of second type of algebraic expression. Thank you.